And it's day one of Devendra Fadnavis as Maharashtra's Chief Minister. A grand oath-taking ceremony was held at Mumbai's iconic Azad Maidan. It was attended by Prime Minister Modi, Chief Ministers of NDA-ruled states, superstars from the Hindi film industry, and all eyes will now be on the portfolio distribution. Remember, it's not yet over. On the question of battle for the Home Department, the home berth for the state government, Chief Minister Fadnavis has recalled his tenure as Home Minister of Maharashtra and claimed he handled it with conviction. Added that Maharashtra's law and order will remain top priority. Sources also adding here that to India Today telling us that BJP is likely to take the Home Ministry, the Revenue Ministry, the Speaker's position and Chairperson of Legislative Council. Shiv Sena, led by Eknath Shinde, look closely on your screen, according to our sources, may get Urban Development Ministry. Also wants Chairperson of the Legislative Council post. On the other hand, what does NCP want? NCP wants Finance Ministry and Deputy Speaker position. कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा, ये अंतिम चरण में है। उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे। यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। और जहां तक पुराने मंत्रियों का सवाल है, तो उसमें निश्चित रूप से सभी के काम का एक मूल्यमापन तो हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। उस मूल्यांकन क्योंकि हमारे जो दोनों साथी है, एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, हम तीनों ने बैठकर ये तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। आणि मी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी यांचे मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी देखील 2.5 वर्षामध्ये मी मुख्यमंत्री असताना देवेंद्रजींनी अजितदादांनी दोघांनी सहकार्य केलं आणि दोघांचंही योगदान आमच्या सरकारमध्ये एक टीम म्हणून आम्ही काम केलं। आणि म्हणून आज मी कालही पत्रकार परिषदेत म्हणालो राजभवनला की 2.5 वर्षापूर्वी माझं नाव त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सुचवलं आणि मी त्यांचं नाव यावेळेस मुख्यमंत्री म्हणून सुचवलं, याचाही आनंद मला आहे।